Hello everyone, welcome back to LITMAILS. This video is going to be on chapter 6, Nation and its Women, from the book The Nation and Its Fragments by PARTHA CHATERJEE. इससे पहले मैंने चैप्टर 1 पे एक वीडियो बनाया था. माई सजेशन वुड बी आप वो वाला वीडियो जाके ऊपर वाले आई बटन से उसका पहला जो 2-3 मिनट्स है उसको देख लीजिए, so that you have an idea about what the book is about. पार्थर चैटर्जी का आइडिया क्या है, वो इस बुक के थ्रू, इस टेक्स्ट के थ्रू वो क्या पोर्ट्रे करना चाहते हैं, एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में नेशन एंड इट्स वुमेन पढ़ रहे हैं. यू कैन चेक आउट दैट वीडियो फ्रॉम द आई बटन ऑन टॉप और फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो लेट्स बिगिन. वेरी ब्रीफली मेरी कोशिश रहेगी मैं पूरा इंटायर टेक्स्ट कवर कर पाऊँ, सो प्लीज़ बी पेशेंट विथ मी. साइड में एक copy and pen rakhiye so that you note down each time you understand the points. Let's begin. So the name of the chapter is Nation and its Women, right? पहले वीडियो में मैंने मेंशन किया था how we are dealing with nation and its different fragments. एक नेशन में उसके नेशनलिज्म का रोल उसके हर एक हिस्से में डिफरेंट एस्पेक्ट्स में कैसे अफेक्ट करता है, how it runs parallel and deals with each concept. So we are beginning with the first thing here, that is the women's question. अगर हम women's question के बारे में सोच रहे हैं, you have to remember and understand कि यहाँ पर question का मतलब कोई सवाल असल में नहीं है, as in जब हम women's question के बारे में बात करें, we are actually understanding, pointing out towards a central issue. So when we are talking about women's question, it's not like औरतों को कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या औरतें खुद कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ऑलराइट, इट इज़ ओरिजिनली एक्चुअली इट इज़ अबाउट ए सेंट्रल इशू रिवॉल्विंग अराउंड द वुमेन इन कॉन्टेक्स्ट विद द नेशन. तो 19th सेंचुरी बंगाल में वुमेन रिलेटेड जो कुछ प्रॉब्लम्स थे, स्टार्टिंग फ्रॉम विडो रीमैरिज टू सती प्रथा, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्शियल डिबेट्स होती रहती थी. तो यहाँ पर चैटर्जी बोल रहे हैं कि वुमेन्स वेलफेयर के रिलेटेड जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, वो अराउंड 1870s में बहुत एड्रेस हो रही थी, बट धीरे धीरे इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड. वो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं ऑफ सम prominent people which we have come across at some point. We have read them about them in history. So first we begin with Raja Ram Mohan Roy. And everyone knows how his fame was built around his campaign against the practice of immolation, जो कि सती प्रथा के अगेंस्ट थे वो. The next example we have here is विद्यासागर. ये विडो रीमैरिज को लीगलाइज करना चाहते थे और क्लिन पॉलीगैमी जो है उसको अबॉलिश करना चाहते थे. He was against the concept of polygamy. The next example he gives here is our ब्राह्मण समाज. ब्राह्मण समाज में बहुत सारे डिबेट्स, क्वेश्चंस वगैरह होते थे. वो तो 2 बार स्प्लिट भी हो चुका था, सिंपली बिकॉज ओवर द क्वेश्चंस ऑफ मैरिज लॉज एंड एज ऑफ कंसेंट. सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स that he has mentioned here simply indicates to one thing कि कैसे all of these issues revolved around women and how they are being addressed and what is being done to solve them. सो दिस ब्रिंग्स अस, यहाँ पर चैटर्जी इस बात पर ही इज़ पॉन्डरिंग, ही इज़ थिंकिंग कि जो रिलेशनशिप है एक नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी और वुमेंस क्वेश्चन के बीच में, वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप प्रॉब्लमेटिक हो गया है. हैज़ इन एनी वे द नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी और नेशनलिज्म अफेक्टेड द वुमेन इश्यूज और वुमेन क्वेश्चंस इन एनी वे, और व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द बोथ. सो यहाँ पर ही ब्रिंग्स अप मुर्शिद्स आर्ग्यूमेंट. मुर्शिद यहाँ पर बोल रहे हैं, मुर्शिद एक्चुअली बोलते हैं कि 19th सेंचुरी में ये जो वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ थे, जो एक तरह का थॉट प्रोसेस वगैरह था, वो भारतीयों की माइंड्स में इसीलिए आ रहा था, एज इन आ रहा था, इसी के कारण लोगों के मन में women's question started rising. So he meant to say that women's question actually rose because of Western ideologies. लेकिन चैटर्जी डज नॉट अग्री विथ दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ मुर्शिद. इनफैक्ट चैटर्जी इस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं और वो बोलते हैं कि क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मुर्शिद जी ने जो कहा है वो गलत है, और वो ये बोलते हैं कि मुर्शिद जी को लगता है कि भारत में मॉडर्नाइजेशन इसीलिए हुआ, वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ के लिए ही हुआ, एंड फॉर नो अदर रीज़न. सो इसी थॉट प्रोसेस को चैटर्जी क्रिटिसाइज़ करते हैं.
उनको लगता है कि मुर्शिद जी इज़ अज्यूमिंग समथिंग दैट इज़ नॉट. Then, to prove this, he is also stating, Chatterjee is stating सुमित सरकार's argument, जहाँ पर वो बोल रहे हैं कि भारत में the need of modernity emerged in India, keeping beside Western ideologies. So it was not that only Western ideologies came in, इसीलिए people needed modernization, people had questions of modernization. That's not true. Modernization started to shape in India rather because there was a need of modernity. तो ऐसे करके वो ऐसे का जो पहला हिस्सा है, ही ट्राइज टू प्रूव दैट नेशनलिज्म हैज़ ओनली रिजॉल्व द आइडिया ऑफ वुमेन्स क्वेश्चन इन देयर ओन मैनर. There are total 5 parts in the essay. We'll move on to the second part. In the second part of essay, वो culture के division के ऊपर बात करते हैं between the East and the West. Now, when we are talking about East and West, make sure you understand which parts they are. Usually these parts are, since we are talking in context of India here, our nation here, so let's it in that way. तो यहाँ पर वो division करते हैं between material and spiritual. I hope now till now you are familiar with the concept of materialism and spiritualism. So Chatterjee tells कि जो colonizers थे, they were very materialistic because वो चाहते थे to take over technology and they were using modern methods and modern sciences, and since they were very materialistic, they were very money oriented. With the help of these things उन्होंने बाकी कॉलोनाइज्ड को सब्जुगेट किया, यानी बाकी जिन लोगों पे दे वर ट्राइंग टू रूल उनको ओप्रेस किया, सप्रेस किया. सो दे ट्राइड टू सप्रेस दीज पीपल यूजिंग दीज मेथड्स, बट इवन आफ्टर डूइंग दैट दे कुड नॉट, बिकॉज द ईस्ट वॉज स्पिरिचुअली वेरी सुपीरियर. Which kind of means that even if India was colonized, Britishers आए, many people tried to rule us, but even after that they did try to use materialistic methods, but वो हमसे हमारा spirituality नहीं ले पाए. So spiritually the East is more superior than the West. So there's a very good quote written over here. Please take a screenshot or write it down in your copies. और वो इसी आइडिया को अप्लाई करते हैं इन मटेरियल एज द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल एज द इनर वर्ल्ड, जो इनसाइड. सो यहाँ पर वो एक आइडियोलॉजी देते हैं विच इज़ द बाहर एंड घर आइडियोलॉजी, विच इफ़ यू अप्लाई कॉमन सेंस इट्स pretty much easy to understand. बाहर वो external world है, वो दुनिया है जहाँ पर we go out, we go out to earn money, we try to exist, we try to survive in this world. Things are very treacherous and usually also considered the male of the domain of the male, because previously women were not allowed to go out of the house. But ghar is usually referred to something very peaceful. It is where home is. It is where we find our true identity. It is very contrasting to the material world, and it is usually the women that are its representation. So he brings out this ghar and bahar ideology in this part of the essay. और इसी चीज़ को अगर हम कॉलोनियल सिचुएशन में देखें तो एक डिफरेंस आ जाता है बिटवीन वर्ल्ड एंड होम. आई हैव गिवन द डिस्टिंक्शंस क्लियरली हियर. तो यहाँ पर जो दुनिया है, वर्ल्ड, दैट इज़ द बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड. तो ये वो जगह है जहाँ पर यूरोपियन पावर ने नॉन यूरोपियन पीपल को चैलेंज किया बिकॉज ऑफ देयर सुपीरियर मटीरियल कल्चर. और ये जो बाहर का दुनिया था, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट होम फॉर द कॉलोनाइज्ड बिकॉज दे वर बीइंग ऑप्रेस्ड, दे वर बीइंग ह्यूमिलिएटेड एंड दे हैड टू एक्सेप्ट. कॉलोनाइजर्स जो रूल हम पे दे जा रहे थे, दैट हैड टू बी एक्सेप्टेड बाय अस और द कॉलोनाइज्ड. जबकि होम को उस चीज़ को रिफ़र किया जा रहा है जिधर कॉलोनाइज नहीं हो पाए, which means they could not take away from us our spirituality. They could not take from us our spiritual culture, our distinctive spiritual culture. So ये एक हिस्सा है in life that they could not colonize us. And this is the reason why this needs to be protected and it needs to be preserved, ताकि हमारा national culture और भी strengthen होता जाए. Now, in the third part of the essay, there is emergence of literature, जहाँ पर
इस बारे में बात चल रही है that there is a threat of westernization of Bengali women in early century. So usually what happens slowly जब westernization होता गया, even Bengali women started to be more aware about their rights and how they should live their lives. So slowly even they started to pick up some western ways of living. They wanted to live life in luxury. And तो जो कुछ राइटर्स थे, ईश्वर चंद्र गुप्ता, माइकल मधुसूदन दत्त, दीनबंधु मिश्रा, थ्रू द फॉर्म ऑफ नॉवेल्स, पेंटिंग्स, जो भी आर्टिस्ट, जो भी वो लोग वर्क क्रिएट कर रहे थे, सो मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स रिडिक्यूल्ड हाउ अ बंगाली वुमन वाज ट्राइंग टू इमिटेट वेज ऑफ अ मेम साहब. I have mentioned some examples here. Please check it out. If I explain all the examples, the video will बहुत लंबा हो जाएगा. So please check out the examples I have given on the screen. एक और चीज़ I will mention here. चैटर्जी यहाँ पर also देखते हैं भूदेव मुखोपाध्याय पारिवारिक प्रबंधन. There he mentions how Bhudev has written that women should preserve their homes and they should not depend on household workers, etc. etc. So basically Bhudev is actually trying to ridicule how women are trying to become more materialistic, or they are trying to imitate the Western ideologies or culture. So here also there is a quote that certain degree of imitation of alien ways was unavoidable, but could this wave of imitation be allowed into our house? He didn't want this thing to come into the homes. भूदेव के हिसाब से जो मटेरियलिस्टिक नेचर था वो एनिमल लाइक क्वालिटीज़ था, बट जो स्पिरिचुअल नेचर थे इट वाज लाइक गॉड लाइक क्वालिटीज़. That brings up to the fourth part of the essay, which is about the emergence of new women who became a part of the patriarchal society. यहाँ पर Chatterjee brings out a new concept of a new woman as contrasted with a common woman. A new woman is usually considered to be good, और जो common woman है, she is depicted as vulgar, loud, quarrelsome, and she has no morals, etc. Plus he also talks about how there was an idea of female education. उसको देखा जाता था in terms of preservation of spiritual culture, where women were taught in Bengali, since there was a lot of imitation of Western culture, etc. So there was a lot of efforts to teach women in Bengali to preserve the national culture. As you can see on the screen, there was also the idea of Bhadra Mahila as one who acquired culture refinements within the education but didn't jeopardize her home. Like we discussed in the earlier previous quote, कि to some limits, imitation, inspiration is fine. But as long as it does not spoil the peace of your home, it can be tolerated. Apart from that or beyond that, it's unacceptable. So there was of this understanding, the idea of a liberal woman who was one who was educated but enough to keep the home in working condition. Like we said, उनको educate किया जाता था but not in a level ताकि उनके खुद के घर का सुख शांति spoil हो. So that was kind of the idea of the liberal woman. But now these days the feminine virtues have started to change because women have started to become more aware. They are traveling, they are starting to go out, they are understanding their rights. So जो उनके virtues थे, they started to be known as visible traits. It is simply because she tried to change her lifestyle. उनको वो traits लगता था, or simply because of how she dressed or how she ate or behaved. But anyway, regardless of all this, women still had to practice religious texts. उनको जो concept था spirituality का, उसको भी still follow करना था in a modern way, but they still had to follow it. That brings us to the last part of the essay, जहाँ पर चैटर्जी ये point out करते हैं about a significant feature जिसमें in which nationalism has sought to resolve the women question in accordance with historical project. So basically he's trying to conclude by saying that कि women's question को लेकर जो problem था, it was a problem and the problem lies in the part that इस वुमेन्स क्वेश्चन को एक पॉलिटिकल क्वेश्चन का हिस्सा नहीं बनाया गया, विच कुड मीन दैट ही इज़ ट्राइंग टू इंडिकेट दैट दीज थिंग्स वर नॉट इन्वॉल्व्ड, or the issues of women were not trying to be or were not involved in all the aspects of colonial state or in their aspect of life. In fact, it was regarded as something that was different, that was probably out of the context.
सो जो विमेन थे उनको ये एक्सपेक्ट किया गया था कि वो ये रोल मेंटेन करे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ इंडिया and forever to keep maintaining the same role. So, hence, in and all, he's trying to understand women's question and women's central issues and all these aspects in relation with the nation, in relation with nationalism. And he's not considering this as something very different or something a totally different concept. And this is what he's trying to tell in the essay. I'm hoping this video was helpful. If you liked it, then do let me know in the comment section. Don't forget to like and subscribe and share with people who may need this, and I will see you in my next video.